That is, we start with unit number 3, that is mobile propagation model, small scale fading and diversity. Before going to the unit number 3, I already told you that we discuss unit number 2, university ask question in today's lecture. So here is the university question paper, that is 2018 in same question paper. So in 2018, explain the basic concept of cellular telephone. Then explain the channel assignment strategies. Explain concept of cell splitting. Explain how it improve the cellular system performance. Or explain in detail hexagonal geometry cell structure. B. What do you mean by handoff? Explain handoff strategies in detail. So look at this. This is channel assignment strategy. Explain concept of cell splitting, how to improve the cellular system performance, explain detail of hexagonal geometry cell structure, and what do you mean by handoff, and explain the handoff strategy in detail. 2018 and same question paper. Explain in detail cellular mobile system. Then write a short note on cell splitting and cell sectoring. Cell splitting and cell sectoring. Next, how frequency reuse technique used in cellular system. So this is two questions on unit number 2. That is, write a short note on cell splitting and cell sectoring and how frequency reuse technique used in cellular system, and explain in detail cellular mobile telephone system. Next, in 2019 May, end same question paper, end same 2019. End same, end same 2019. Explain the concept of cell sectoring and cell splitting. Explain digital cellular system.
Next, 2019 in same question paper. What do you mean by handoff? Explain anyone to handoff strategy. Define grade of service. What are the type of trunk system? Explain its type in detail. Next, explain concept of frequency reuse for cellular communication system. Difference between cell splitting and cell sectoring. Define grade of service and what are the type of trunk systems. Explain concept of frequency reuse for cellular communication system. Difference between cell splitting and cell sectoring. 2019 and same. Explain in brief microcell zone concept. ये था यूनिट नंबर 2 के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन. सो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं आपके यूनिट नंबर 2 में. So from today onwards, we start unit number 3, that is mobile propagation model, small scale feeding and diversity. So for going further, we first look at the syllabus of unit number 3. That is first point, introduction to radio wave propagation. What is mean by radio propagation? Second, free space propagation model. Third, basic propagation mechanism, reflection, diffraction and scattering. In reflection, there is a ground reflection model. In diffraction, there is a Neff edge diffraction model and scattering. These three propagation models. Next one, fourth point, that outdoor propagation model. In outdoor propagation model, there is a lonely rice model, Durkin model, Okumura model and Hatta model. Fifth, indoor propagation model. Indoor. Fourth one था outdoor propagation model. Fifth one indoor propagation model. In that partition loss, that is in same floor. Then partition losses between floors. Erosion multiple breakpoint model. Attenuation factor model. 6 point, small scale multipath propagation, that factor influencing small scale fading. Then point number 7, multipath measurement parameter of multipath channel. Type of small scale fading. In that, fading effect due to the multipath time delay spread, fading effect due to the Doppler spread,
9-1 rhythm and region distribution. So propagation of electromagnetic waves. In communication using radio waves, an antenna at the transmitter radiates the electromagnetic waves, EM waves, which travel through the space and reach the receiving antenna at the other end. As the EM wave travels away from the transmitter, the strength of the wave keeps on decreasing. Several factors influence the propagation of EM waves and the path they follow. At this point, it is also important to understand the composition of the Earth's atmosphere, as it plays a vital role in the propagation of EM waves. Ground wave. To radiate signals with high efficiency, the antennas should have a size comparable to the wavelength, lambda, of the signal, at least approximately lambda by 4. At longer wavelengths, that is, at lower frequencies, the antennas have large physical size and they are located on or very near to the ground. In standard AM broadcast, ground-based vertical towers are generally used as transmitting antennas. For such antennas, ground has a strong influence on the propagation of the signal. The mode of propagation is called surface wave propagation, and the wave glides over the surface of the earth. A wave induces current in the ground over which it passes, and it is attenuated as a result of absorption of energy by the earth. The attenuation of surface waves increases very rapidly with increase in frequency. The maximum range of coverage depends on the transmitted power and frequency, less than a few megahertz. Sky waves. In the frequency range from a few megahertz up to 30 to 40 megahertz, long distance communication can be achieved by ionospheric reflection of radio waves back towards the earth. This mode of propagation is called sky wave propagation and is used by shortwave broadcast services. The ionosphere is so called because of the presence of a large number of ions or charged particles. It extends from a height of about 65 kilometers to about 400 kilometers above the Earth's surface. Ionization occurs due to the absorption of the ultraviolet and other high energy radiation coming from the sun by air molecules. The ionosphere is further subdivided into several layers. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, the details of which are given in table. The degree of ionization varies with the height. The density of atmosphere decreases with height. At great heights, the solar radiation is intense, but there are few molecules to be ionized. Close to the Earth, even though the molecular concentration is very high, the radiation intensity is low, so that the ionization is again low. However, at some intermediate heights, there occurs a peak of ionization density. The ionospheric layer acts as a reflector
for a certain range of frequencies, 3 to 30 megahertz. Electromagnetic waves of frequencies higher than 30 megahertz penetrate the ionosphere and escape. These phenomena are shown in the figure. The phenomenon of blending of EM waves so that they are diverted towards the Earth is similar to total internal reflection in optics. Space wave. Another mode of radio wave propagation is by space waves. A space wave travels in a straight line from transmitting antenna to the receiving antenna. Space waves are used for line of sight LOS communication as well as satellite communication. At frequencies about 40 megahertz, communication is essentially limited to line of sight paths. At these frequencies, the antennas are relatively similar and can be placed at heights of many wavelengths above the ground. Because of line of sight nature of propagation, direct waves get blocked at some point by the curvature of the Earth as illustrated in figure. If the signal is to be received beyond the horizon, then the receiving antenna must be high enough to intercept the line of sight waves. If the transmitting antenna is at a height ht, then you can show that the distance to the horizon dt is given as dt equals to square root of 2 rht, where r is the radius of the Earth, approximately 6,400 kilometers. dt is also called the radio horizon of the transmitting antenna. With reference to figure, the maximum line of sight distance, dm, between the two antennas having heights ht and hr above the Earth is given by dm equals to root 2 rht plus root 2 rhr, where hr is the height of receiving antenna. Television broadcast, microwave links, and satellite communication are some examples of communication systems that use space wave mode of propagation. The above figure summarizes the various modes of wave propagation discussed so far. सो ये जो आपने देखा वीडियो, ये था 7 एक्टिव स्टूडियो चैनल करके. थैंक यू वेरी मच 7 एक्टिव स्टूडियो that made this beautiful and knowledgeable video. So you all seen this video, that is mobile propagation, that is means by radio wave propagation, how radio wave propagations happens. Before going next, पहले के इसमें देखा, वीडियो में देखा तो वो कुछ तो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बता रहे थे. तो उसी तरह से जो प्रोपोगेशन होता है वेव का, उसमें किस तरह से वो जो रिफ्लेक्शन है उसका काउंटिंग, या किस वे से एंटीना की हाइट, एंटीना का रिफ्लेक्शन, किस तरह से वो प्रोपोगेशन अच्छे से हो, इसके लिए कुछ तो भी मॉडल्स होते हैं. मॉडल्स मतलब क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आपका क्या बनता है, वहां पे टावर इस्टेब्लिश करना या किस वे से उसको स्ट्रांगली बनाना, ये काम मतलब क्या है, आपका
ये मॉडल्स जैसे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल, इसके बाद डिफ्रैक्शन नीफ एज डिफ्रैक्शन में नीफ एज डिफ्रैक्शन मॉडल, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। या यहाँ पे ये आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल में, मतलब आउटडोर में किस वे से हम एंटीना का प्रोपोगेशन होता है और किस वे से वो रिड्यूस किया जाता है, उसका जो भी तो जैसे यहाँ पे देखो रीच मॉडल है, लॉन्गली रीच मॉडल, डर्किन मॉडल, कुमोरा मॉडल एंड हट्टा मॉडल। तो आप बोल रहे हैं सर हमको ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान में रखना है क्या? तो मैं आपको बोल दूं, आपको सिर्फ इसका थ्योरेटिकल ध्यान में रखना है, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन एक भी नहीं आएगा यूनिट नंबर 3 में। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा और उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेंगे तो आप वो मत करो। आप सिर्फ ध्यान में रखो कि ये थ्योरेटिकल वे से कैसे जाएगा, डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में, इसके ऊपर आप फोकस करो। और यहाँ पे देखो, ये जो है मैंने यहाँ पे ये एंटीना के फोटो निकाले हैं, रियल फोटो है ये, मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा था उस वक्त के फोटो है ये। तो यहाँ पे देखो ये इस टाइप के अलग अलग एंटीनाज आपको मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये ड्रम जैसे एंटीनाज है, ये स्ट्रेट एंटीनाज है। यहाँ पे देखो ये अगर आपको यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, ये मैंने काट दिया, रियलिस्टिक था इसका किसी का तो भी बिल्डिंग के ऊपर है ये, तो इसलिए ये नाम मैंने ये कर दिए। मगर यहाँ पे देखो यहाँ से एक वायर गई है, यहाँ पे देखो ये वायर गई है और ये इस जगह पे गया है, और यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसकी हाइट देखो, ये हाइट में ये जो फर्स्ट वाला है ये हाइट में ज्यादा है, और ये छोटे छोटे एंटीना देखो ये इस साइड के। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि यही हमको यूनिट नंबर 3 में देखना है कि किस वजह से एंटीना का इन्होंने यहाँ पे क्यों लगाया, दूसरी जगह पे क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे का रीजन क्या है। या ये दो एंटीना यहाँ पे लगाए हैं, तो इस एंटीना के ऊपर आपको ये ड्रम नहीं दिखेगा, इस एंटीना के ऊपर ये अलग अलग लेंथ की साइज है। तो यहाँ पे देखो ये भी, यहाँ पे भी देखो कितने ड्रम है, 1 2 3, इस तरह से ड्रम है सब यहाँ पे, या इस तरह से ये एंटीनाज है। तो ये इस वजह से ट्रांसमीटर रिसीवर स्टेशन है ये। तो ये कैसे वर्क करते हैं, किस बेस के ऊपर वो वेव ट्रांसमिट होती है, क्या उसके पीछे रीजन है कि रेडियो वेव्स प्रोपोगेशन करने के लिए कौन से पैरामीटर ध्यान में रखे जाते हैं कि जब ये एंटीना की हाइट या कुछ चीज लगा मतलब डिसाइड करनी होती है। तो ये जो है ये हमारा ये यूनिट नंबर 3 का है, ये वो उसी का ही फोटो है, सिर्फ दूसरे इससे लिया है मैंने। तो इस वजह से हमको ये यूनिट नंबर 3 देखना है कि जो ट्रांसमीटर स्टेशन है वो किस बेस के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, या चैनल असाइनमेंट करते वक्त कौन से इसके ऊपर चैनल असाइनमेंट करते हैं। तो हम ये यूनिट नंबर 3 में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम ये सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो सभी ने वीडियो ऑन करने आपके, मैं यहाँ पे स्नैपशॉट लेने वाला हूँ सबका। ओके, सो 1 मिनट बाकी है, सभी ने फास्ट। फार कमी जण हे केलं, माझ्या होते बाकी जणांनी पीसी वरनच केलेलं दिसतंय, स्मार्टफोन वरून फार कमी जणांनी केलेलं दिसतंय, कारण स्मार्टफोन असला तरच आपण पटकन त्याला हे करू शकतो। काय ठीक आहे, पण 1 मिनिट लेस दॅन 1 मिनिट बाकी, कधी पण मीटिंग एंड होईल।